तनाव मतलब आजकल ये शब्द इतना आम हो गया है, पर क्या हम सच में समझते हैं कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है? इसका हमारे शरीर, हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आज हमारे पास कुछ स्टडीज और आर्टिकल्स हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हम देखेंगे कि ये जो लगातार वाला तनाव है ना, क्रॉनिक स्ट्रेस, वो कैसे हमारे सिस्टम को धीरे धीरे मतलब अंदर से कमजोर करता है, और फिर इससे निपटने के साइंटिफिक तरीके क्या हैं। हाँ, जानना जरूरी है कि कैसे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर पर इसके असर से। अक्सर लगता है कि ये बस दिमाग की बात है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम लगातार स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, जैसे कोई इमरजेंसी हो। बिल्कुल, वो लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स। तो दिल की धड़कन तेज रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और ये अगर लंबे टाइम तक चले तो दिक्कत, हाई बीपी, दिल की बीमारियां। हाँ बिल्कुल, और इसमें कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का बड़ा हाथ होता है, वो लगातार हाई रहते हैं। और दिमाग का क्या? मैंने खुद महसूस किया है कि तनाव में फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग जैसे धीमा पड़ जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तनाव सीधा हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पर असर डालता है। दिमाग का जो हिस्सा खतरे को पहचानता है, एमिगडाला, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जो लॉजिक वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तभी शायद ज्यादा इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। हाँ, फोकस करना मुश्किल, सोचना समझना धीमा, ये सब होता है। और वो जो एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है, चिंता, उसे क्या कहते हैं? रूमिनेशन। हाँ, रूमिनेशन। और वो चीज वो बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि आप बार बार उसी नेगेटिव सोच को दोहराते हैं। तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार एक्टिवेट होता है, भले ही असल खतरा टल गया हो। इससे बॉडी पर वेयर एंड टेयर बढ़ता है। और लोग अक्सर इससे बचने के लिए गलत तरीके अपना लेते हैं, है ना? जैसे टाल मटोल करना। हाँ, ये बहुत कॉमन है। अवॉइडेंस या फिर इमोशनल ईटिंग, मतलब स्ट्रेस हुआ आप तो कुछ मीठा खा लिया या ज्यादा खा लिया। हाँ। या फिर बहुत ज्यादा काम करना। ये सब थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाते हैं, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल, बल्कि और बढ़ जाती है। फिर गिल्ट भी होता है। तो इन पैटर्न को पहचानना पहला स्टेप है। तो फिर सही तरीके क्या हैं? असरदार तरीके? सांस लेने वाली टेक्निक्स की बहुत बात होती है। हाँ, और वो वाकई में काम करती हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट कंट्रोल करने का तरीका है। अच्छा। गहरी धीमी सांसें पेट से, मतलब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम को जगाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तुरंत आराम मिलता है। मैंने साइक्लिक साइन के बारे में भी सुना है। कहते हैं रोज बस 5 मिनट करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप लंबी सांस लेते हैं, फिर बिना छोड़े एक और छोटी सांस, और फिर धीरे से पूरी सांस छोड़ते हैं। ओके। रिसर्च कहती है कि ये मूड सुधारने और बॉडी को शांत करने में, मतलब स्ट्रेस कम करने में बहुत असरदार है। शायद ध्यान से भी ज्यादा तेज। कमाल है। और ये तो कहीं भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा। और वो सोच बदलने वाला तरीका, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, वो कैसे काम करता है? उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें सिचुएशन से नहीं, बल्कि उस सिचुएशन के बारे में हमारी सोच से स्ट्रेस होता है। मतलब नजरिए का खेल है। हाँ। तो पकड़ो जांचो बदलो वाली बात है। पहले अपने नेगेटिव विचार को पहचानो, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। फिर उसे चैलेंज करो, क्या ये सच है? क्या पहले कभी ऐसा कुछ किया है? हाँ। और फिर उसे बदलो एक ज्यादा बैलेंस्ड या पॉजिटिव सोच से, जैसे ये मुश्किल है पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस से आता होगा। हाँ, थोड़ा अभ्यास चाहिए, पर बहुत असरदार है होते हैं। वो नेचुरल मूड लिफ्टर हैं। और नींद और तनाव का तो 2 वे रिश्ता है। नींद खराब तो स्ट्रेस ज्यादा तो नींद खराब। ये तो है। तो अच्छी रेगुलर नींद, मतलब 7 से 9 घंटे, बहुत जरूरी है बॉडी और माइंड को रीसेट करने के लिए। स्लीप हाइजीन जरूरी है, मतलब सोने जागने का टाइम फिक्स रखना, सोने से पहले स्क्रीन कम देखना। सही कहा, छोटी छोटी आदतें। अच्छा, और खान पान और सोशल कनेक्शन संक्षेप में? खान पान का सीधा असर मूड पर है। गट ब्रेन एक्सिस की बात होती है, मतलब पेट की सेहत दिमाग की सेहत से जुड़ी है। तो अच्छा साबुत खाना खाएं। और सोशल कनेक्शन, अच्छे रिश्ते, दोस्त, परिवार, ये स्ट्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। बात करने से, सपोर्ट मिलने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सुकून मिलता है। ठीक है। और आखिर में ये जो सप्लीमेंट्स आते हैं, अश्वगंधा वगैरह या अरोमा थेरेपी, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे अश्वगंधा एडेप्टोजन कहलाते हैं। ये बॉडी को स्ट्रेस से डील करने में शायद मदद करते हैं, पर इन पर दवाओं जैसी सख्त रेगुलेशन नहीं है। अच्छा। तो असर और सेफ्टी की गारंटी कम होती है, सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और अरोमा थेरेपी जैसे लैवेंडर ऑयल कुछ लोगों को शांत करता है। ये लिम्बिक सिस्टम पर असर डाल सकता है, पर ये बहुत व्यक्तिपरक है। तो मतलब ये मेन तरीकों के साथ एक एडिशनल चीज हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये मेन स्ट्रेटजीज का विकल्प नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि तनाव जिंदगी का हिस्सा है, पर हमें इसके आगे बेबस होने की जरूरत नहीं। हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, सांस लेने से लेकर सोच बदलने तक, लाइफस्टाइल में बदलाव तक। बिल्कुल। और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर तनाव बहुत ज्यादा है, कंट्रोल से बाहर लग रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है, या बहुत ज्यादा उदासी या निराशा महसूस हो रही है, हाँ, तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं। थेरेपिस्ट या डॉक्टर से बात करें, और अगर कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए तो तुरंत मदद लें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की बातचीत को यही रोकते हैं, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
आज हमने जिन तरीकों की बात की उनमें से कोई एक छोटी सी आदत, सिर्फ एक, अगर उसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करें तो तनाव के साथ आपके रिश्ते में क्या फर्क आ सकता है, सोचिएगा जरूर। Is there an invisible enemy living in your shadow? A silent thief that steals your smiles, drains your energy, and whispers worries into your ear when you're trying to sleep? What if I told you this enemy has a name? It's called stress. And today, we're not just going to fight it. We are going to uncover the secret natural superpowers you already have to make it disappear. First, unlock with power of your own breath. This isn't just air, it's magic. Try this secret code. Breathe in for 4 seconds, hold that power for 7 seconds, and then breathe out slowly for 8 seconds. Feel that? That's you taking back control. It's a secret weapon you can use anywhere, anytime. Next, connect to the Earth's own energy. It's called grounding. Just take off your shoes and walk on grass for a few minutes. Feel the ground beneath your feet. This simple act is like plugging yourself into a charger, draining away the stress and filling you with calm, positive energy. And the final secret? Unleash your joy. Put on your favorite song and just dance. Don't think, just move. Sing out loud. Dancing is a happiness explosion that forces stress to run and hide. It's your personal joy switch. See? The greatest power to defeat this enemy isn't in a pill or a quick fix. It's been inside you all along. You are the hero of your own story. So, the next time stress knocks on your door, use your superpowers. If this video sparked a little magic in you, hit that like button, share the secret with your friends, and subscribe for more adventures. Remember, stress is just a chapter, not your whole story. You get to write the ending. Until next time, stay shining, stay powerful, and let your inner light break through any shadow. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਉਹ ਯੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ? ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ। ਦੇਖੋ, ਲੰਬਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ। ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਟ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗਟ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਿਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਣਾਅ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਣਾਅ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਐਮਿਗਡਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੀਐਫਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਊਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰੋਤ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਡਾਇਫ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਹਾਂ ਉਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਬਾਕਸ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 4 ਗਿਣਨ ਤੱਕ ਸਾਹ ਅੰਦਰ, 4 ਤੱਕ ਰੋਕੋ, 4 ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ 4 ਤੱਕ ਫਿਰ ਰੁਕੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ, PMR ਤੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਕਸਰਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨੀਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਟ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਰੀਫਰੇਮਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਜਰਨਲਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ। ਠੀਕ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਨੀਂਦ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਸਰਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ 1-2 ਤਕਨੀਕਾਂ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੈਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वधिया गलबात ਲਈ। शुक्रिया जी। अगली बार फिर मिलेंगे। सत श्री अकाल। क्या आपके कंधों पर भी एक अनजान सा बोझ है जो आपको नीचे खींच रहा है? एक ऐसी उलझन जो आपको हर पल परेशान करती है, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं पर आपकी सारी खुशियां छीन लेता है। ये अनजान दुश्मन है स्ट्रेस, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसकर उसे बेरंग बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुश्मन को हराने का राज आपके अंदर ही छिपा है? आज हम पर्दा उठाएंगे उन अनोखे और आसान नेचुरल तरीकों से जो स्ट्रेस को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। सबसे पहले अपनी सांसों की शक्ति को पहचानिए। जब भी स्ट्रेस महसूस हो, गहरी सांस लें। इसे कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 7 सेकंड तक रोकिए और फिर मुंह से 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये सिंपल टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और आपको तुरंत आराम देती है। दूसरा, जमीन से जुड़िए। इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट नंगे पांव घास पर चलिए। माना जाता है कि इससे अर्थ की नेचुरल एनर्जी आपके शरीर में आती है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। और तीसरा, सबसे मजेदार, अपने पसंदीदा गानों पर जम कर नाचिए। म्यूजिक और डांस स्ट्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। तो देखा आपने, स्ट्रेस को हराने का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है। आपको किसी अनहेल्दी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि असली पावर आपके अंदर है।
तो अगली बार जब स्ट्रेस आप पर हावी हो तो इन नेचुरल तरीकों को जरूर आजमाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रेस आपकी कहानी का एक छोटा सा चैप्टर हो सकता है, पूरी किताब नहीं। ये आसान टेक्निक्स अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके आप अपनी कहानी का एंड बदल सकते हैं। एक खुशहाल, स्ट्रेस फ्री जिंदगी की शुरुआत आज से ही करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उमंग और जोश के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर भगाइए। You know that feeling, right? Where you're just completely swamped. Every little thing, every new email, it all feels like it's piling on until you can barely breathe. It's just exhausting. But what if you could actually flip that script? Go from feeling totally overwhelmed to feeling, well, empowered. In this explainer, we're going to break down the real science of what's happening in your body and brain, and then we're going to build a clear, actionable toolkit so you can take back control. Does it ever feel like you're just stuck on a hamster wheel? You're running and running, dealing with all this pressure and worry, but you're not getting anywhere. It feels like this impossible cycle to escape. But here's the thing. Understanding exactly how that wheel is built is the absolute first step to finally getting off it for good. Okay, so let's get one thing straight right away. Not all stress is the enemy. Believe it or not, there's actually good stress, or eustress. That's the short-term kick that helps you nail a deadline or gets you fired up for a big game. That stuff's great. But what we're talking about today is its nasty twin, chronic stress. This is the stuff that sticks around. It's persistent, it's overwhelming, and it doesn't just drain you, it actively, physically damages your body. And that is the absolute key. Chronic stress isn't just a feeling or a bad mood or a tough week at work. It is a physiological state that causes real, tangible harm, a lot of which happens in ways we can't even see at first. So let's pop the hood and see what's really going on in there. So every time you're stressed, your body hits a panic button and releases hormones like cortisol. Normally, that's fine. But in a state of chronic stress, that button is just stuck. The alarm never turns off. And this constant flood keeps your heart rate jacked up, your blood pressure high, and it causes inflammation in your blood vessels. It literally helps your arteries harden. It's a slow, sustained attack on your heart. And the damage doesn't stop there. It hits our gut, which a lot of scientists call our second brain. Stress basically messes up the phone line between your gut and your brain. This can lead to all sorts of fun stuff like diarrhea or constipation. But worse, it can actually damage the lining of your gut, causing what's known as leaky gut, which then triggers even more inflammation all over your body. Now this is where it gets really scary. Chronic stress can physically change the structure of your brain. I'm not kidding. It can actually shrink your prefrontal cortex, that's the part for smart decisions and focus. At the exact same time, it makes your amygdala, your brain's little threat detector, bigger and way more trigger happy. It literally rewires your brain to be more anxious and less resilient. This quote just nails it. The engine that keeps this whole destructive cycle going, it's worry. When you just sit there and dwell on your stressors, replaying that argument in your head over and over, that's called rumination. And every time you do it, you're actively pushing that stress panic button again, keeping those quarters of a level sky high. Worry is not passive. It's a direct attack on your own body. Okay, I know, that was a lot of bad news. It sounds pretty bleak, right? But here is the big pivot. This is the most important part. You are not helpless here. You have the power to step in, to break this vicious cycle, and to start building a new, better one from the inside out. So, how do we do it? We're going to build your resilience toolkit. We'll break it down into 3 sections. First, some mind-body first responders for when you're stressed right now. Second, the long-term foundations for building calm. And third, some seriously powerful techniques for rewiring your thoughts and your environment. All right, first up, we need some first aid. What do you do in the moment when you feel that wave of anxiety or stress just washing over you? These are your first responders, the tools you can deploy immediately. And the most powerful, most portable tool you have with you at all times is your breath. Now, don't worry about memorizing this whole chart. The point is to see that there's a specific tool for every job. Are your thoughts racing out of control? Box breathing is your best friend. Trying to relax and get to sleep? The 4-7-8 method is amazing. It's all about having the right tool at the right time.
So let's learn one you can use absolutely anywhere, anytime. It's called box breathing, and it's so simple. You just inhale through your nose for a count of 4, hold it for 4, exhale slowly for 4, and hold again for 4. That's it. This simple rhythm gives your racing mind something to focus on, and that slow exhale sends a direct signal to your nervous system to calm down. And for anyone thinking, I don't have time for this, check this out. One study found that just 5 minutes a day of something called cyclic sighing, it's basically 2 sharp inhales followed by a long, slow exhale, was actually more effective at improving mood than mindfulness meditation. 5 minutes. That is a massive return on your investment. Okay, so we've got our emergency first responders. That's great for in-the-moment relief. But how do we stop those fires from starting in the first place? Now we build the foundation. These are the daily habits that build up your resilience to stress over time. Let's be clear, consistent movement is completely non-negotiable for managing stress. And it's so much more than just feel-good endorphins. Exercise actually helps regulate your body's entire stress response system over time. It basically lowers your body's stress thermostat. You want to aim for about 150 minutes a week of something that gets your heart rate up, like a brisk walk, a jog, anything like that. It is a powerful, powerful antidote. You know how when you're super stressed, all you want is ice cream and chips? Well, that's a vicious cycle. Stress makes you crave junk, and that junk can actually make your mood worse. To break the cycle, you want to eat to beat stress. Think complex carbs like oatmeal to give your brain a steady supply of serotonin. Get some omega-3s from salmon or seeds to fight that inflammation. And remember to feed your second brain, your gut, with lots of fiber and fermented foods. Let's talk about the absolute bedrock of resilience, sleep. It is everything. Without good sleep, your ability to handle even tiny little stressors just plummets. And if you're going to focus on one thing here, make it consistency. Try to go to bed and wake up at roughly the same time every day. Yep, even on weekends. That anchors your body's internal clock. It is a game changer. All right, so we've covered the physical tools for your body. For this final part of our toolkit, let's talk about the mind. How can we actually rewire our thought patterns and use our environment to build up our defenses against stress? This is like a workout for your brain, and it is so powerful. Remember how we said that worrying keeps the stress cycle going? Well, this is how you stop it. It's a simple 3-step process. Catch it, check it, change it. First, just catch the negative thought. Notice it without judgment. Second, check it. Ask yourself, is this thought 100% true, or is there a more balanced way to look at this? And finally, change it. Consciously swap that distorted thought for the more realistic one. It takes practice, but it's life-changing. I know this might sound a little bit soft, but I promise you it is pure biology. Connecting with people you trust isn't just a nice to have, it's a biological necessity. When you have a positive interaction with someone, your brain releases a hormone called oxytocin. You can think of it as the bonding hormone. And what does it do? It acts like a brake on your stress response. It is literally a physiological antidote to cortisol. And finally, maybe the simplest tool in the entire toolkit, just get outside. There's a ton of research on what's called ecotherapy, and it shows that spending time in nature is an incredibly potent way to lower stress. It reduces cortisol, it boosts your mood, and it can even help you focus better. And you don't have to go on some epic hike. Even just a short walk in a local park makes a real, measurable difference. So here it is. Let's put it all together. This is your stress management toolkit. You've got your in-the-moment first responders, like box breathing. You've got your long-term foundational pillars, like exercise and sleep. And you've got the mental and environmental tools, like cognitive reframing and getting into nature. Every single one of these is a tool you can pick up and use to actively build a more resilient, less stressed you. Okay, we've covered a lot of ground. We've talked about the science, we've walked through the strategies, but here's the truth. Knowledge without action is useless. So I want to end with a direct question for you. Look at that toolkit. Don't feel like you have to do everything at once. That's just another way to get overwhelmed. Just start with one. So my question is, what one tool will you use today?